right, you're seeing there flashing on your bottom of your screen. Rahul Gandhi has just spoken out, this time on sports czars. Remember, all big organizations from the IOA, the Indian Olympic Association, to the BCCI, to the Indian Hockey Federation, they've all been run by politicians. Now, Rahul Gandhi says, keep netas out of the sports administration. Will it apply, Mr. Rahul Gandhi, to your own party netas like Rajiv Shukla, who, remember, hold key posts within the BCCI, your ally Sharad Pawar, who holds key posts in the cricketing body in Maharashtra? Rahul Gandhi, well, he says that more power should go to sports persons in deciding issues related to sports. Well, many people in the country have been demanding that. Rahul Gandhi has been demanding that, is now demanding that. Now, the big question is, and as I pull in my colleague Abhinav Sai joining us on the phone line, the big question, Abhinav, he doesn't talk a lot about what happens to people like Rajiv Shukla and Sharad Pawar. Yes, and this seems like a straight message to people like Rajiv Shukla, Sharad Pawar, and people on the other side of the fence like Mr. Arun Jaitley and Mr. Narendra Modi, and some of the people that Rahul is trying to align with, like Lalu Yadav, who are all heading powerful sports bodies. So this is going to open a Pandora box. He is going to ruffle a lot of feathers. Okay, Abhinav Sai, hold your thought. My colleague Karthikeya is with us, but before I come to you, Karthikeya, Rahul Mehra joining us on the phone line. Rahul Mehra, is something that you demanded for years and years, to get these politicians out of sports bodies. Do you think Mr. Rahul Gandhi is just trying to tap into popular sentiment and he doesn't really mean to deliver? Well, frankly, I don't care what Mr. Rahul Gandhi is trying to tap into. What I only care about is that it's good for Indian sports. And whether he's doing it for his own popularity or for vote bank or for whatever it might be. It's a welcome stand, and I wholeheartedly welcome it. But it's not only sheer talk that's where he must end. Now that he has initiated this at the political level, at least charity must begin from home. And he must ensure that all the political bigwigs, starting from Rajiv Shukla, CP Joshi, and all others, his allies like the Farooq Abdullahs and the Sharad Pawars, he must ensure that each one of them immediately put in their papers and they resign and they say goodbye to sports, because they are the ones who are eating into the vitals of Indian sports. And unless and until these politicians who have completely hijacked Indian sports and created fiefdoms for their own vested interests, unless and until they exit, Indian sports can't have a new entry into the hearts of people, and it can't excel. Okay. So it's important. Are you disappointed generally, Rahul Mehra, that many top leading sports stars are so reluctant to speak out against these political masters? Obviously, I am. Look at how cricket, the conflict of interest and the conspiracy of silence has completely overshadowed everything. Even the greats of the kinds of Gavaskars and Kapil Devs and the others are completely subservient to the powers that be of the Srinivasans, Shuklas, Jaitlis and others. And the same story is everywhere else, be it Suresh Kalmadi, Abhay Chautala, be it all other people who are ruling the roost in every other sport. Right. So there are many, but just one thing I want to add out here. I can give a suggestion to Mr. Rahul Gandhi, provided he wants to take it. There is a CCS conduct rule which restricts every government servant to a maximum of 4 years or one term, whichever is less, as an elected post in a sports body. Why doesn't he bring about a same thing for the public servants also, all the politicians, that more than 4 years you can be there for a maximum. Rahul Mehra, point well made. Point well made. You're welcoming the comment by Rahul Gandhi, the sentiment, but you're hoping that people within the party. All right. Olympian and Indian sporting legend Milkha Singh joining us on the phone line. Mr. Singh, do you welcome the statement by Rahul Gandhi, sir, that the sporting federation should be left to sportsmen such as yourself? Mr. Singh, if you can hear me, do you welcome this suggestion by Rahul Gandhi, sir? नहीं, मुझे कमेंट करने हैं कि मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूं कि जो भी फेडरेशन हैं उसके अंदर स्पोर्ट्समैन आने चाहिए, मगर हमारा सिस्टम ऐसा है कि उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जब भी कभी इलेक्शन होती है, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आज मिल्खा सिंह एथलेटिक फेडरेशन के लिए खड़ा हो जाए तो मुझे 2 वोट भी नहीं मिलेंगी, और अगर कोई पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट खड़ा होगा तो सारी वोट्स वो लेके चला जाएगा। आपने पहले भी देखा है कि हॉकी के अंदर प्रगट सिंह खड़ा हुआ,
और एक लेडी जो है 82 इयर्स की हिमाचल से उसके अगेंस्ट लड़ी और वो जीत गई और प्रगट सिंह हार गया जो कैप्टन था इंडियन हॉकी का। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सिस्टम चल रहा है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शन होनी है, इलेक्शन होते ही। लेकिन मिल्खा सिंह जी ऐसा क्यों है कि सिस्टम चल रहा है कि सिर्फ नेता लोग वोट पा पाते हैं, ऐसा क्यों है? वो आप चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमें कोई भी हो एथलेटिक का प्रेसिडेंट बने, कोई भी हॉकी का प्रेसिडेंट बने, मगर जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने देश के लिए जाने कुर्बान की हैं और जिन लोगों ने देश के लिए तिरंगा झंडा ऊंचा किया जाके दुनिया में, उनको साथ रखना चाहिए। जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो टेक्निकल आदमी हैं, उनको फेडरेशन वालों को ये सोचना चाहिए कि उनकी हेल्प लेके हम तभी कंट्री की गेम का स्टैंडर्ड ऊपर कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है ये जाना। मिल्खा सिंह जी, आपको क्या ऐसा लगता है कि राहुल गांधी साहब बोलते हैं कि स्पोर्ट्स वालों को ही स्पोर्ट्स फेडरेशन चलानी चाहिए, तो इनको क्या कौन रोक रहा है कि जैसे राजीव शुक्ला हैं बीसीसीआई में, कौन रोक रहा है इनको, राहुल गांधी को इनको हटाने से? मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ता, मैं किसी की बात नहीं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो। मैंने तो आपको सीधी बात बताई है कि ये बैठे रहें, कुर्सी संभाल लें, कुर्सी ले लें, हमें नहीं कोई इससे मतलब है। मगर जो टेक्निकल आदमी हैं, जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया ओलंपिक गेम्स के अंदर, एशियन गेम्स के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, उनको ये साथ रखें। अगर ये साथ रखेंगे तो हमारी गेम्स का स्टैंडर्ड जो है और बढ़ेगा, आगे जाएगा। मिल्खा सिंह जी, देश में गुस्सा है मिल्खा सिंह जी, जो लोग भी देखते हैं कि देशवासियों को, इंडियन सिटीजन्स को इसमें कोई से नहीं है, सारी स्पोर्टिंग फेडरेशन गवर्नमेंट से लिंक नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो इसकी सफाई कैसे होए? तो इसकी सफाई ये हो सकती है, मैंने आपसे कहा है कि जो भी हमारी कंट्री का स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, अगर फर्ज करो मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूं, तो मैं तो हर एक फेडरेशन से पूछूंगा ये कि जब मैं आपको जाने के लिए ओलंपिक गेम्स के अंदर, एशियन गेम्स के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पैसा देता हूं आने जाने का, मैं आपको खाने के लिए कैंप्स वगैरह जो होते हैं उनके लिए पैसा देता हूं, हर एक चीज के लिए पैसा देता हूं, तो मेरा ये फर्ज बनता है पूछना कि आप लोगों का स्टैंडर्ड क्या है। तो मैं ये चाहूंगा कि आईओए की और गवर्नमेंट की एक मीटिंग होनी चाहिए जिसके अंदर जितनी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज हैं वो वहां पे होने चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि आपका 4 साल का या 8 साल की क्या प्लानिंग है, आने वाली ओलंपिक गेम्स के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, मेडल हमें लेके देंगे कि नहीं देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, गवर्नमेंट को सीरियस होना होगा। जो आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है, उनका मेन मतलब ये है कि उनको हमारी कंट्री की खेलों का स्टैंडर्ड जो है ऊपर बढ़ाना है, वो तभी बढ़ेगा। सब जितनी एसोसिएशन है स्टैंडर्ड बढ़ाइए, अकाउंटेबिलिटी मांगिए। That's what Milkha Singh, a sporting legend whom every Indian would recognize. You've heard his voice there commenting on Mr. Rahul Gandhi's suggestion that sporting federation should be left to sportsmen. Mr. Milkha Singh saying that at least the technical part of sport should be left to the experts because from his experience, when it comes to elected posts, the stranglehold belongs to these politicians. Anil Singera, sports correspondent, joining me now from the newsroom to add a bit of perspective and depth to the story. Anil Singera, the bottom line is there's nothing stopping Rahul Gandhi from telling people within his own party to hang up their boots in sporting federations. Absolutely, yes, and obviously the main personality is Rajiv Shukla. He's been involved in the BCCI for many, many years. He's also involved in the IPL Governing Council. He's obviously a huge member of the Congress Party. Yes, he can obviously speak to members of his own party and his own colleagues about sports nethers, and that's something which many people have been crying out. Clean Sports for India, a kind of sporting NGO that have been trying to get more sports stars running the game rather than depending on politicians. All right. You know, Anil, we give our viewers a chance later on in prime time to open our phone lines and speak out about this topic. But for now, we leave it there because